So good morning to all of you, and welcome back again in the online lectures of Higher Science College Sauner for BSc Semester 3 Paper 1, having the name Angiosperm Morphology, Angiosperm Systematics, Embryology, and Indoor Gardening. So dear students, in the previous lecture we have started the unit number 3 having the name Embryology. Under the heading of embryology, we have discussed the part of pollination, types and significance. Now we are discussing here the part of anther, which is related to the male reproductive in case of the flower. So in case of flower, the male reproductive whorl which is called as the androecium, ठीक है, उसे हम लोग androecium कहते हैं. The male reproductive whorl is called as the androecium. Individual members of androecium is called as stamens. ठीक है, जो individual members होते हैं androecium के उन्हें stamens कहा जाता है. Stamens consist of the filament, connective and the anther. Structure of anther देखते हैं हम लोग. Immature stage of anther is represented by the group of parenchymatous tissue surrounded by the single layer of epidermis. Anther is generally dithecous. Dithecous means it consists of the two anther lobe and tetrasporangiate structure. Each monothecous anther, mono means यहाँ पे single anther lobe रहेगा, ठीक है, which contains the pollen sacs. In the dithecous anther, 4 pollen sacs are present. ठीक है, dithecous anther जो होता है वहाँ पे 4 pollen sacs होते हैं. Therefore, it is tetrasporangiate. The heterogeneity arises when some hypodermal cells get transformed into the archisporial cells. Let's just talk about this TS of anther. Now, what is this TS? TS means transverse section. The transverse section of anther, it shows the 4 anther lobe. ठीक है, या फिर वहाँ पे pollen sac है, फिर pollen chambers वहाँ पे present होते हैं. The archisporial cells divides into an inner sporogenous cells and outer primary parietal cell. Sporogenous cells forms the sporogenous tissues. Each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to the microspore tetrad. ठीक है, हर एक sporogenous tissue जो होता है वो microspore tetrad प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है. Parietal cell undergoes the division to form the anther wall layers. The anther wall, the mature anther wall, it consists of the 4 important layers. ठीक है, जो मैच्योर एंथर वॉल होती है उसमें 4 इंपॉर्टेंट लेयर्स होती है. पहली लेयर होती है एपिडर्मिस. Epidermis, it is the outermost protective layer made up of the tabular or flattened cells. The second layer, that is the endothecium. It is the subepidermal layer made up of radially elongated cells with the fibrous thickenings. And inner to the endothecium, there is a presence of middle layer, which is made up of the thin-walled cells, 1 to 2 layered structure, which may disintegrate in the mature anther. The last and important layer, that is the tapetum, it is the innermost nutritive layer of the anther wall. It is immediately encloses the sporogenous tissues, which is called as the microspore. So the anther, TS of anther, it consists of the 4 layers: epidermis, endothecium, middle layer, and a tapetum. This tapetum, it is immediately encloses the sporogenous tissues, that is a microspore mother cells. Now let's just talk about this structure of TS of anther. Very beautiful, and the colorful diagrammatic representation is here in case of the TS of anther. The TS of anther, which consists of 4 main layers: epidermis, middle layer, endothecium, and a tapetum. Other than it also labeled the sporogenous tissues and a connective. The sporogenous tissues undergoes the process of microsporogenesis and is responsible for the formation of the pollen grains. Here are the 2 diagrams, that is the TS of anther only before dehiscence, मतलब ब्रेक होने के पहले या फिर मैच्योर होने के पहले की स्टेज है ये आपको जो दिखाई दे रही है. जो दूसरी डायग्राम दिखाई दे रही है यहाँ पे डेहिसेंस एंथर, मतलब फूटा हुआ ब्रेक हुआ एंथर. देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों चेम्बर जो है वो मर्ज हो चुके हैं
and pollen grains are produced there. यहाँ पे भी ये दोनों चेम्बर यहाँ पे मर्ज हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं. Now let's just talk about this microsporogenesis. Each microspore mother cell divides meiotically to form the tetrad of haploid microspore, that is the pollen grains. हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो बनाती है, इट फॉर्म द टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर. स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर के बारे में देखते हैं. टिपिकल पोलन ग्रेन इज अ नॉन मोटाइल हैप्लॉइड unicellular body with single nucleus. So the typical pollen grain is a non-motile haploid unicellular um, unicellular body with a single nucleus. ठीक है. Microspore means we can call as the pollen grains. ठीक है, इसे हम लोग pollen grains कहते हैं. तो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. और वैसे भी हमें पता है कि जो गमिट्स होते हैं और दे गमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड. यूनिसेल्युलर बॉडी मतलब सिंगल सेल होती है विद द सिंगल न्यूक्लियस. इट इज सराउंडेड बाय द टू लेयर्ड ऑफ वॉल व्हिच इज कॉल्ड एज स्पोरोडर्म. ठीक है, मतलब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें दो लेयर्स होती है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर. ठीक है, कंबाइनली इट इज कॉल्ड एज स्पोरोडर्म. The outer layer is called as exine, which is thick and made up of complex non-biodegradable substance, which is called as sporopollen. It may be smooth or with the sculptured pattern of the characteristics of the species. It is resistant to the chemicals. Means due to the presence of this chemical compound sporopollenin, it becomes resistant to different types of chemicals. At some places, exine is very thin, showing the thin areas which is known as a germ pore. ठीक है, मतलब exine का जो एरिया होता है कुछ जगह पे छोटे छोटे होल्स या फिर पोर्स दिखाता है, थीन होता है, तो उसे जर्म पोर कहा जाता है. These are meant for the growth of emerging pollen tube during the germination of pollen grain. The inner wall layer, that is the intine, consists of the cellulose and the pectin. जो इनर लेयर होती है उसे इंटाइन कहा जाता है और वो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई रहती है. सो यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. द पोलन ग्रेन विच कंसिस्ट ऑफ द एक्साइन एंड इंटाइन. एक्साइन देखिए यहाँ पे तीन जगहों से ब्रेक हुई है, 1, 2 and 3, which are called as a germ pore. Now let's just talk about this development of male gametophyte. Means under the heading Microscorogenesis, we will discuss about the development of male gametophyte. So this male gametophyte can be developed with the help of pollen grains. Pollen grains marks the beginning of male gametophyte. मतलब male gametophyte develop होने के पीछे सबसे पहली सेल जो आती है वो आती है pollen grain. It undergoes the first mitotic division to produce the bigger naked vegetative cells and small thin walled generative cells. ठीक है. So the pollen grains it produce pollen grain it marks the beginning of the male gametophyte. It undergoes the first meiotic division to produce the bigger naked vegetative cells and small thin walled generative cells. तो यहाँ पे दो सेल्स बनती है, वेजिटेटिव सेल्स. देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल्स आर प्रोड्यूस. ठीक है. The vegetative cell is rich in the food and having the irregular shaped nucleus. ठीक है, जो वेजिटेटिव सेल होती है इसमें रिच अमाउंट में फूड होता है एंड हैविंग द इरेगुलर शेप ऑफ सेल्स. The generative cells it floats in the cytoplasm of the vegetative cells. ठीक है, जो जनरेटिव सेल्स होती है वो फ्लोट्स होती है साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल. Then the second mitotic division is concerned with the generative cell only and give rise to the two non-motile male gametes. The mitotic division of the generative cell takes place either in the pollen grain or in the pollen tube.
The pollen grains are shed from the anther at this two cell stage in the most of the angiosperm. ठीक है. So you can see here the development of male gametophyte. सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक pollen grain है, typical pollen grain, कि जिसके पास में इंटाइन है, एक्साइन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है. इसका डिवीजन हो गया, इसकी दो सेल्स बन गई, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. उसके बाद में जो एक्साइन है इसके पास में जर्म पोर है. ठीक है. Then there is a development of there is the cell division. ठीक है. सेल डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट हुई, वहां पे दो मेल गमेट बने हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब. ठीक है. पोलन ट्यूब बन गई वहां पे. दिस पोलन ट्यूब इट कंसिस्ट ऑफ द टू नॉन मोटाइल मेल गमेट्स एंड वन ट्यूब न्यूक्लियस. ठीक है. तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, दैट पोलन ग्रेन अलोंग विद द पोलन ट्यूब व्हिच कंसिस्ट ऑफ द टू non-motile male gametes, then cytoplasm, thin cytoplasm, and a tube nucleus. It is this complete structure is called as a male gametophyte. तो इस तरह से यहाँ पे मेल gametophyte की डेवलपमेंट हुई है. ठीक है. And the part of female gametophyte we will discuss in the next lecture. I think we have to stop here, and remaining portion we will discuss in the next lecture. तब तक के लिए सब लोगों को stay home, stay safe. सब लोगों को बाय. आप लोगों को अटेंडेंस देनी है ग्रुप पे जाके.